प्रोग्राम टाइटल देख के आपको पता चल गया है। We have a lot of stuff for another new Dominar which belongs to Dreams on Wheels Instagram पे तरह तरह की चीजें हैं आज के वीडियो में। कार्बन रेसिंग कुछ लुविया से कहाँ से थोड़ा जिसमें बता दो। विंडशील्ड ले लिया कार्बन रेसिंग से, सयाजी मोटर्स से ले लिया नंबर प्लेट ब्रैकेट, हैंडलबार राइजर और टाइप बी क्रैश गार्ड। जाना मोटर्स से ले लिया सैडल स्टे और पीछे का टॉप रैक और बैकरेस्ट, और उसके बाद लुविया से लिया जो पिलियन फुटरेस्ट है वो भी 2। सो एक एक करके शुरू करते हैं। We will start with the कार्बन रेसिंग वाला विंडशील्ड। हमारा डोमिनार कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो बैठते हो आपका विजन कुछ इस तरीके का रहेगा। तो हाँ, अगर आप चिन माउंटेड कैमरा भी लगाते हो इट विल बी परफेक्टली फाइन। द रोड अहेड इज फाइन, काफी फाइन। और इसका जो हाइट है वो विंड ब्लास्ट को से आपको काफी बचाने वाला है। एंड इट्स प्राउडली मेड इन इंडिया। सो ये है लुविया से पिलियन फुटरेस्ट, आप जो देख पा रहे हो। और दूसरा द सेकंड इज दिस वन, बोथ फॉर लेफ्ट एंड राइट। We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. Just installed the Luvia pillion footrest। ये वाला है राइट पिलियन फुटरेस्ट एंड यहाँ पे लेफ्ट पिलियन फुटरेस्ट। तो पिलियन फुटरेस्ट काफी मजबूत है, यहाँ तक कि आपका पिलियन अगर आराम से यहाँ पे खड़ा भी हो सकता है। एंड लुक एट द लेग स्पेस मैन, मतलब पिलियन को कितना लेग स्पेस मिल रहा है देखो। 81 kgs और पिलियन को लेग स्पेस मिल रहा है देखो। आराम से ऑफ रोड में पिलियन बिंदास। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल कंफर्टेबल एक्सरसाइज फॉर ए पिलियन on a Dominar. Great stuff. तो ये सयाद्री मोटर्स का टाइप बी क्रैश गार्ड फॉर डोमिनार 2019। और इसके साथ जो आता है ये ऐसा 2 क्रैश गार्ड और 4 स्लाइडर्स और एक ये कनेक्टिंग बार। इसके साथ ऑलरेडी वो लोग एलन बोल्ट्स प्रोवाइड कर दिया है अंदर भी। और एक्स्ट्रा ये कुछ शायद से 4 या 5 एलन बोल्ट्स दिया हुआ है जो कि वहां पर फिट हो। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. So finally, ये सयाद्री का टाइप बी क्रैश गार्ड has been fitted on the Dominar 2019। कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड इट इज डेफिनेटली बहुत ही मजबूत है ये। विद 2 फ्रेम स्लाइडर्स। एलएस वाला में 1 फ्रेम स्लाइडर आता है लेकिन इसमें 2 फ्रेम स्लाइडर है। एंड द लुक्स आर आल्सो प्रीटी गुड। इसमें और एक एडेड एडवांटेज है, आप ये देख पा रहे हो फॉग लाइट का जो माउंट है उसका लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, हाउ द क्रैश गार्ड लुक्स फ्रॉम बिहाइंड। काफी प्रोटेक्टिव विद बोथ द फ्रेम स्लाइडर्स। जाना का
सैडल स्टेज एंड द टॉप बॉक्स रैक। तो काफी सारा पार्ट दिया हुआ है इसके साथ। We are forever learning, one step at a time. I can't say if I like wild elephants or not. I don't like elephants at all. तो फिलहाल ये जो लास्ट में हम लोगों ने लगाया जाना की सैडल स्टे एंड जाना टॉप बॉक्स रैक एंड दी जाना पिलियन बैकरेस्ट। सो सब कुछ फिटिंग करने के बाद हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हो लुविया की पिलियन फुटरेस्ट के साथ ये जो जाना का सैडल स्टे है ये अटैच करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और फाइनली आफ्टर इट्स डन दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके साथ मेन जो पार्ट्स आया था, एक तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नंबर 1 पार्ट है मेजर पार्ट है ये वाला जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नंबर 2 मेजर पार्ट है ये वाला जो कि टॉप बॉक्स का रैक है। ये दोनों फिट करने के बाद यू हैव टू फिट दिस सैडल स्टे एंड इसको फिट करने के बाद आखिरी में यू हैव टू फिट दिस सैडल स्टे कनेक्टर। So that's about it. This is the Dominar which has been completely modified. Belongs to dealer of my friend or Dreams on Wheels. So कुछ इस तरीके का दिख रहा है। I love the carbon racing windshield for sure.